તો રાજકોટ લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલાએ વિવાદની વચ્ચે ફરી એક વખત ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરી। ક્ષત્રિય સમાજ પર ટિપ્પણીને લઈ અને વિવાદ વચ્ચે ગઈકાલે દિલ્હીથી પરત ફર્યા બાદ આજે તેઓએ પૂરજોશની સાથે પ્રચારની શરૂઆત કરી। રાજકોટમાં મહિલા મિલન કાર્યક્રમમાં પરસોત્તમ રૂપાલા ટિફિન બેઠકમાં સામેલ થયા, જ્યાં તેઓએ જેના અન્ન ભેગા તેના મન ભેગા હોવાનું કહ્યું હતું। साधारण श्रमजीवी बहन थी मांडीने काउंसलिंग करवा वाली बहनों आपनी आ टीम में छे। केटला जुदा जुदा प्रकल्पों साथे जोड़ायेली बहनों छे अने बधाने मणकाओने एक सूत्र तरीके भावनाबेन परोवीने सुंदर मजानो हार मित्रों आपना संगठन शक्ति थी एना एक भागरूपे एमने टिफिन बैठकों शुरू करावेली। ये टिफिन बैठक माटेनी एमने बात अहीं महिला मंडळना बहनों करेली कि हूँ आऊँ छूँ, मारो आजनो कार्यक्रम में टिफिन बैठकनुं आयोजन समावेश है। बहनोए टिफिन लई आव्या, रूपाला साहेबनी साथे सौए जमीन पर बेसीने प्रसाद लीधो। राजकोटनी मातृशक्तिए जे एमने आशीर्वाद आप्या छे, उमळकाभेर आशीर्वाद आपी अने एमना विजयनुं जाणे एक विजय तिलक कर्युं एवुं लागी रह्युं छे। आशापुरा माताजीना मंदिर रूटीन में दररोज सवारे उठी और ज्यां प्रचार में जाए छे पहला एक मंदिर में दर्शन करिए। आज आशापुरा माताजीना मंदिरे रूपाला साहेब दर्शन कर्या, चूंदड़ी चढ़ावी, नारिયેળ વધાર્યું અને ત્યાંથી અમે પ્રચારનો પ્રારંભ